You might be thinking, what am I doing and why am I doing this? Right? Wait, let me pause this here and tell you the story. Last weekend, I climbed this hill called as Savandurga Hills, and I really enjoyed the experience of completing this steep climb to the top. Woohoo! Later, I did a research about the place and I got to know that this is one of the largest monolith hills in Asia. Now, monolith means a single rock standing tall like a mountain, and Savandurga Hills is 1226 meters above the sea level. Out of curiosity, I looked for other monolith hills in Karnataka, and the first name that popped up was Madhugiri Fort. And it is also considered as one of the most difficult and dangerous trek near Bangalore. In pictures, it definitely looked adventurous and beautiful, so I decided to drive to the place and experience the trek for myself. What's up everyone, I hope you're doing fine. My name is Nishit and you're watching Hopping Bug. Today we are going to one of the most difficult trek near Bangalore, which is Madhugiri Betta. It's a 2 to 2.5 hour long trek, and I think there's a fort at the top of the trek, and this is also a monolith. This one is the second largest, but still it is one of the most difficult one because they say that there are a couple of places on this trek where you really need a support but you don't have one. The starting point of the trek is roughly about 3 hours drive from Bangalore. So we are on our way. We have taken a stop to have something before the trek, and I'm really excited to see this one. So let's go. How is it? It's very nice. क्या? पहले तुषार भी मना कर रहा था, मैंने इसको दे दिया. तुम भी एक ले लो 40 स्पेस. So we have reached at the base of the Madhugiri Hills. We'll start the trek now. एक चीज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हम लोगों को. As you can see right behind me, there are so many clouds. So it might rain today. Although इस साइड से बिल्कुल धूप हो रहा है. But अगर बारिश होने लगती है, then it will be a very difficult trek because it's very steep. This fort was built in 15th century AD by the king of Vijayanagar Empire, Hari Gowda. उसके बाद 16th century AD में few of the kings from Mysore kingdom like Tipu Sultan, Hyder Ali, and there are few more who later on occupied this place and did the actual establishment of this fort. तो जो भी डेवलपमेंट इस फोर्ट में हुआ था वो मैसूर किंगडम के लोगों ने किया था. उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को भी नहीं है. अभी चलते हैं जल्दी से एंड लेट्स स्टार्ट दिस ट्रैक टुडे. Wake me up when September ends. अभी आधा घंटा हुआ है ट्रैक करते करते. ऑलरेडी हालत ख़राब हो चुकी है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्टीप है ये क्लाइंब. एज यू कैन सी राइट बिहाइंड मी, बिल्कुल ऐसे चढ़ के जाना है. बीच में तो थैंकफुली ये रेलिंग से नहीं तो बहुत स्लिपरी भी हो गया था. ऑल्दो लाइक 20-25 मिनट हुए हैं ट्रैक करते हुए, बट वी हैव ऑलरेडी गेन्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट हाइट एज यू कैन सी ऑल अराउंड. As of yet, this was the most difficult stretch. बिल्कुल ऐसे incline है और एकदम ऐसे टेढ़ा होके आना पड़ रहा है. With this heavy bag, it's even more difficult.
Finally we have made it to the top of the peak. ये वाला ट्रैक इतना ज़्यादा लंबा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सावन दुर्गा. आई थिंक सावन दुर्गा में 2.5-3 घंटे लगे थे. इसमें आई थिंक 1.5-2 घंटे में यू कैन ईजिली कंप्लीट दिस ट्रैक. And the views from the top are like really amazing. We'll just stay here for some time. We'll enjoy the views. And I think in next half an hour, we'll start the descent. इट्स अ वेरी गुड ट्रैक एक्चुअली. मैंने काफ़ी टाइम के बाद ट्रैक किया. बीच में बहुत सारी जगह पे तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे बिकॉज इट वॉज वेरी स्लिपरी. बट आई थिंक दोज रेलिंग्स एंड दैट रोप विच वॉज देयर नो जिसको पकड़ के हम आ रहे थे दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. सावन दुर्गा से तो ईजी था, छोटा भी था, बट बहुत जगह पे स्लिपरी था और काफ़ी स्लांट था. अगर स्टेयर्स नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना. हाँ, प्लस एक स्ट्रेच तो वो काफ़ी मुश्किल था. वो वाला तो बहुत वो वाला तो मेरी भी हालत खराब हो गई थी. और वहाँ पे पता नहीं उन्होंने रोप क्यों बांध के दी हुई है. वो पकड़ेगा तो कोई पक्का गिरेगा क्योंकि वो उल्टी साइड है रोप. हाउ डिड यू गाइस क्लाइंब विदाउट रोप? मैं वैसे तुम लोगों से पहले आ गई थी बिकॉज आई एम मोर एनर्जेटिक देन यू लूजर्स. बट वो रोप हाउ डिड यू क्लाइंब विदाउट होल्डिंग दैट रोप? मैंने तो वही पकड़ा है. It's roughly about 5 o'clock in the evening right now. We are now starting the descent. I think it should take us 1 hour to reach the bottom where we have parked our vehicle. And यहाँ से Bangalore जाने में it will take us 3 hours. I would say it was a pretty fun trek. You can definitely come over here over the weekend if you are staying in Bangalore or even if nearby. You should definitely come to this place. सारी बकचोदियाँ, थंबनेल और क्या है, ड्रोन, बी रोल, ए रोल, सी रोल, Everything is done. Careful. Look at this. How steep is this, man? So scary. So it was a really good trek. I personally enjoyed the experience. I hope you all enjoyed the video as well. Do let me know your feedback in the comment section and do hit that like button and subscribe to my channel if you are new. I'll see you soon in the next one. Until then, peace. Almost done.